हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एचपी टेट मेडिकल के लिए बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। यह एमसीक्यूज़ आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, साथ ही कुछ न्यू एमसीक्यूज़ भी इसमें ऐड किए गए हैं। यह क्वेश्चन जो है टीजीटी में भी पूछे गए हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं और अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वह कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। Question number 1 is the rigidity of the cell wall is needed to, options are, protect cell from other organism, to give cell a definite shape, to permit only selective exchange of minerals with the outside environment, to prevent it from bursting on account of excessive inflow of water. Rigidity of cell wall is needed to, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, to prevent it from bursting on account of excessive inflow of water. Option number D is the correct answer. Next question is the framework element of plants are, options are, magnesium, copper, iron, copper, carbon, oxygen, manganese, calcium, nitrogen, carbon, hydrogen and oxygen. Correct answer is the option number D. कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वह फ्रेमवर्क एलिमेंट्स हैं प्लांट्स के। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच एलिमेंट प्रोवाइड रिजिडिटी टू टीथ एंड बोन्स। ऑप्शंस दिए गए हैं, आयरन एंड कैल्शियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड फॉस्फेट या फिर आयरन एंड फॉस्फोरस। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस provides rigidity to teeth and bones. Option number C is the correct answer. Next question is the which sugar is known as grape sugar. grape sugar किसे कहा जाता है? ऑप्शंस आर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज या फिर गैलेक्टोज। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज को ग्रेप शुगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ग्लूकोज इज नोन एज grape sugar. Next question is the number of amino acid known to occur in cells and tissue of organism are. organism में कितने amino acids present होते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं 26, 20, 170 या फिर 270। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, 20 अमाइनो एसिड जो है वह सेल्स और टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड क्यूट कॉमनली फाउंड इन प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में कितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं 26, 20, 170 या फिर 270। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, 20 अमाइनो एसिड्स आर फाउंड इन प्रोटीन्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Next question is the insulin crystals are found in, options are wheat root, mango root, dahlia root या फिर sugar cane root. Correct answer is the option number C. Insulin crystals are found in dahlia root. Option number C is the correct answer. Next question is the chief element required by a plant for making its protein is, options are calcium, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम या फिर नाइट्रोजन। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन is a chief element required by a plant for making its protein. Option number D is the correct. Next question is the term protein was coined by, options are Henry, Songer, Berzelius या फिर Dujarrier. Correct answer is the option number C. The term protein was coined by Berzelius. Option number C is the correct answer. Next question is the most abundant protein in the plant world is found in, options are root hairs, mitochondria, chloroplast या फिर virus. Correct answer is the option number C, chloroplast. The most abundant protein in the plant world is found in chloroplast. Next question is the helical structure of DNA was proposed by, options are Bedley and Tatum, Wilkins and Franklin, Watson and Crick या फिर Comberg and Nirenberg. Correct answer is the option number C, Watson and Crick. Next question is the temperature above
80 to 19 degree centigrade causes DNA. Options are to form RNA, to break into two fragments, to break into many fragments, या फिर to uncoil and separation of two strands. Correct answer is the option number A. Temperatures above 80 to 90 degree centigrade causes DNA to form RNA. Option number A is the correct answer. Next question is that the idea of individuality of cells was expressed by. Options are सकवान, कोटाई, ड्यूट्रेचेट या फिर ड्यूजर्डिन. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी. ड्यूट्रोचेट इज द करेक्ट आंसर. The idea of individuality of cells was expressed by Dutrovchet. Option number C is the correct. Next question is the nucleus was first discovered by. Options are Robert Koch, Robert Brown, Leeuwenhoek या फिर सकवान. Correct answer is the option number B. Robert Brown. Nucleus was first discovered by Robert Brown. Option number B is the correct. Next question is on the basis of his own observation as well as those of others, Skildon in 1838 proposed that cell is the structural and functional unit of life. The idea was a observation, assumption, generalization या फिर none of the above. Correct answer is the option number C. Generalization. The idea was a generalization. Option number C is the correct answer. Next question is the outermost part of the plant cell is. Options are nuclear membrane, plasma membrane, cellulose cell membrane या फिर epidermis. Correct answer is the option number C. Cellulose cell wall is the outermost part of the plant cell. Option number C is the correct. Next question is an old cell is characterized by. Options are the absence of any vacuole, presence of two nuclei, the absence of nucleus या फिर presence of large vacuole. Correct answer is the option number D. An old cell is characterized by the presence of large vacuole. Option number D is the correct. Next question is the exobiology is the study of. Options are terrestrial organism, exodermis, life on other planets या फिर life in the air. Correct answer is the option number C. Exobiology is the study of life on other planets. Option number C is the correct answer. Next question is the karyology is the study of. Options are virus, bacteria, cytoplasm या फिर nucleus. Correct answer is the option number D. Karyology is the study of nucleus. Option number D is the correct answer. Next question is the study of seasonal flowering in shrubs and trees is known as. Options are dendrology, dendrochronology, phenology या फिर anthology. Correct answer is the option number C. Phenology. The study of seasonal flowering in shrubs and trees is known as phenology. Option number C is the correct answer. तो ये आज के लिए 20 क्वेश्चंस थे जो आपके HP टेट मेडिकल के लिए हेल्पफुल रहेंगे. तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही. बाय बाय, टेक केयर.